Good morning to all my dear friends. Welcome back to my channel Brainy Knowledge, and today in this video we are going to discuss Governor Generals and Viceroys of India. So let's begin. So friends, in this video we are going to discuss when Governor Generals and Viceroys were appointed. The following Governor Generals: Warren Hastings, Lord Cornwallis, Lord Wellesley, Lord Hastings, Lord William Bentinck, Lord Dalhousie, Lord Canning, Lord Lawrence, Lord Northbrook, Lord Lytton, and Lord Ripon. So let's begin with the when Governor Generals and Voices start appointed. When Governor Generals and Viceroys were appointed. According to Regular Act of 1773, सबसे पहले आया Regulating Act of 1773. The Governor General title was introduced. Governor General title introduced हुआ और Governor General of Bengal बनाया गया. Was to be appointed by Court of Directors for a period of 5 years. The first Governor General under East India Company, first Governor General कौन था? Was Warren Hastings. अब दूसरा एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी कॉल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसने क्या कहा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो ही इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाएगा. तो इसके हिसाब से द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was Lord William Bentinck. The Governor General of India was given the title of Viceroy for the first time in 1858. 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को नया टाइटल दे दिया Viceroy. After the revolt of 1857, the British government witnessed. British government ने क्या देखा कि mismanagement by the East India Company, and therefore the government introduced a representative head titled as the Viceroy of India. It means कि जो यहाँ इंडिया की जो पावर थी वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चली गई थी. So friends, first comes the Warren Hastings from 1773 to 1785. Hastings abolished the dual system in which the company had Diwani rights to collect revenue, and the Indian chiefs had the administrative authority. Dual system को abolish किया. The annual tribute paid to the Mughal emperor was also stopped, and Nawab's annual allowance was reduced to 16 lakh from 32 lakh. नवाब की जो अलाउंस थी वो 32 लाख से 16 लाख कर दी. ट्रेजरी खजाना was moved from मुर्शिदाबाद to कलकत्ता. मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित किया गया ट्रेजरी. Two types of courts was established. First was civil courts, Sadar Diwani Adalat for civil cases. Second was criminal courts, Sadar Nizamat Adalat for criminal cases. Wars fought: first Anglo-Maratha War 1775 to 1782 and second Anglo-Mysore War. 1780 में बंगाल गजट, द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू बी printed. So friends, now comes the Lord Cornwallis from 1786 to 1793. Cornwallis introduced the permanent settlement of land revenue. First काम क्या था इसका? Introducement of permanent settlement in Bengal and other parts of India. The Cornwallis Code was developed in 1793, which includes division of powers. Cornwallis founded a संस्कृत कॉलेज at बनारस. बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की. Top posts were reserved for the Europeans only. यूरोपियंस के लिए सिर्फ टॉप पोस्ट रखी गई, whereas Indians were offered lower grade posts. Cornwallis established 4 courts, 3 courts in Bengal and 1 court in Bihar. The highest Supreme Court was the Supreme Court of Calcutta.
वॉर जो फोर्ट हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इन 1790 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर फोर्ट हुआ था इसकी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी इंट्रोड्यूस हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। सो फ्रेंड्स, नाउ कम्स द लॉर्ड वेलेस्ली फ्रॉम 1798 to 1805. Lord Wellesley introduced subsidiary alliance policy in 1798. 1798 में subsidiary alliance को इंट्रोड्यूस किया गया and many kingdoms agreed to sign on it. Passage of Censorship Act 1799. 1799 में सेंसरशिप एक्ट को पास किया गया। The act required the newspapers to take prior permission of the company before publication. Lord Wellesley founded Fort William College in 1800 in Calcutta for those who wanted to govern India in future. He called himself as the Lion of Bengal. Wars fought was Fourth Anglo-Mysore War in 1799 and Second Anglo-Maratha War in 1803. So friends, next comes the Lord Hastings. From 1813 to 1823, Lord Hastings initiated the new policy of paramountcy. सबसे पहले इसने काम क्या किया कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी को इनिशिएट किया। इट मींस कि जो सुप्रीम पावर है इंडिया में दैट वुड बी ओनली ब्रिटिश व्हिच एम्ड टू एसेट ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर ऑल नेटिव रूलर्स इन इंडिया। Next, establishment of Ryotwari system in 1820 by Thomas Munro. Establishment of Mahalwadi system in 1822 by Holt Mechanize. ryotwari system और महालवाड़ी सिस्टम दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। पैसेज ऑफ बंगाल टेनेंसी एक्ट इन 1822। 1822 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ और इन्फॉर्मेशन ऑफ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन in 1823. Now the wars, first is Anglo-Nepalese War 1814 to 16. Second is Third Anglo-Maratha War 1816 to 1818. The Pindari War 1817 to 1818. Passage of English Education Act 1835. 1835 में इंग्लिश एजुकेशन पास हुआ दैट रिप्लेस पर्शियन विद इंग्लिश, जहां पर्शियन लैंग्वेज को इंग्लिश में रिप्लेस कर दिया गया इन द हायर कोर्ट्स। नाउ द वॉर्स वाज द ओनली वन, द वेल्लोर म्यूटिनी। नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मो समाज इन इंडिया। इसके टाइम में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ब्रह्मो समाज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने एस्टेब्लिश किया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कम्स द लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी फ्रॉम 1848 to 1856. Dalhousie regarded his chief aim in India as the consolidation of British power. इसका मेन एम क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना, मेन एम। He is mostly remembered for the doctrine of lapse policy. Passage of Post Office Act. Post Office Act पास हुआ इसके टाइम में in 1854. First telegraph line and first railway line
लिंकिंग थाने एंड मुंबई, फर्स्ट रेलवे लाइन एस्टेब्लिश्ड हुई लिंकिंग थाने एंड मुंबई। एस्टेब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। Wars fought was the first is second Anglo-Sikh War in 1848 to 1849. Second is second Anglo-Burma War in 1854. First telegraph line laid between Diamond Harbour to Calcutta. लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच। सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ समर कैपिटल एट शिमला, इसने क्या किया था, समर कैपिटल एस्टेब्लिश की थी शिमला में। सो फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट कम्स द लॉर्ड कैनिंग फ्रॉम 1856 to 1862, last governor general appointed by the company and first viceroy appointed by British Kingdom। लॉर्ड कैनिंग जो था वो लास्ट गवर्नर जनरल था कंपनी का, अपॉइंटेड बाय द कंपनी, द फर्स्ट वॉइसरॉय अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंगडम। द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, सबसे जो मेन घटना थी इसके टाइम की वो था इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857। द पैसेज ऑफ हिंदूज विडोज रीमैरिज एक्ट, विधवा विवाह का कानून बनाया गया इन 1856। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर सेटअप। तो तीन यूनिवर्सिटी सेटअप हुई, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। पैसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पैसेज ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1861, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ एंड पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो रिवोल्ट्स कौन कौन से थे, इंडिगो म्यूटिनी इन बंगाल 1859 से 60, व्हाइट म्यूटिनी बाय द यूरोपियन ट्रूप्स इन 1850। So friends, next comes the Lord Lawrence from 1864 to 1869. Establishment of Allahabad High Court in 1866, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट established हुआ। Famine Commission was constituted in 1867, 1867 में famine constitution अकाल आयोग का गठन हुआ under the leadership of Henry Campbell due to Odisha famine of 1866. Passage of Tenancy Act in Punjab and Awadh in 1868. First Ocean Telegraphic Service in 1865. Wars was the Bhutan War 1864 to 1865. Next comes the Lord Northbrook 1872 to 1876. Passage of Dramatic Performances Act in 1876, 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट पास हुआ। सप्रेस्ड कूका रेबेलियन इन पंजाब लेड बाय राम सिंह इन 1872, कूका रेबेलियन को दबाया गया, सप्रेस किया गया। लॉन्चिंग ऑफ सत्य शोधक समाज इन महाराष्ट्र बाय ज्योतिराव फुले, ये मेन घटना थी कि सत्य शोधक समाज लॉन्च हुआ महाराष्ट्र में बाय ज्योतिराव फुले in 1873 against caste system and the practice of untouchability. Foundation of Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875 by Sir Syed Ahmad Khan. Terrible famine in Bengal. Trial of Gaikwad of Baroda in 1870. So friends, next comes the Lord Lytton in 1876 to 1880. Passage of Vernacular Press Act 1878 and Arms Act 1878, दो मेन एक्ट्स पास हुए इसके टाइम में, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 में और आर्म्स एक्ट 1878 में। अपॉइंटमेंट ऑफ फेमाइन कमीशन, पैसेज ऑफ प्रेस एक्ट एंड रॉयल टाइटल्स एक्ट। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ केसर हिंद और क्वीन एम्पेरेस ऑफ इंडिया, इसके टाइम में
क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद का टाइटल मिला। ऑल्सो नोन एज ओवन मेरिडिथ, maximum age to take up civil services exam lowered from 21 to 19, 21 से घटाकर 19 तक कर दी गई मैक्सिमम एज। वॉर्स फोर्ट सेकंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 टू 1880 में, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर इसके टाइम में हुआ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट comes the Lord Ripon from 1880 to 1884. Passage of the first Factory Act in 1881, 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इन 1881। अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, हंटर कमीशन अपॉइंट हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम में। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज डन इन 1881, 1881 में पहली जनगणना हुई, कंप्लीट सेंसस वाज डन इन 1881 ड्यूरिंग Lord Ripon's time. Ilbert Bill in 1883, repeal of the Vernacular Press Act, also known as Father of Self-Government. इसे Father of Self-Government भी कहा जाता है because of setting up of local self-governments, पंचायत and municipal boards. इसने जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप की थी, पंचायत एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स। इंक्रीज द मैक्सिमम एज ऑफ अपीयरिंग इन सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज को बढ़ा दिया गया फ्रॉम 18 टू 21, 18 से 21 कर दिया गया। टू न्यू यूनिवर्सिटीज वर ओपन, दो नई यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1884 एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1887। पहली यूनिवर्सिटी थी 1884 में पंजाब यूनिवर्सिटी एंड देन 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। I hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.